Namaste, I'm Shubhi Mathur and I welcome you all to yet another episode of Let Us Talk. We hope you have realized that we are trying to trigger that action mode in you to reinvent yourself. We are trying to help you to ignite your spark, a spark which never fades at any age. And whenever you get lost, कि कैसे rediscover करें, कैसे वो spark ignite करें, then do listen to this talk. Today we have with us Mr. Utkarsh Narang, a leadership and an executive coach, founder of Ignited Neurons, and now an author also. Welcome Utkarsh, welcome on Let Us Talk. Thank you so much, Shubhi. It's always a pleasure to be back on this channel. Oh, my audience loves your talks and your Bhagavad Gita talks remains a favorite. And these days when we are telling our audience to get out of their comfort zone, to reinvent themselves, and to have that spark ignited. So how could I not have you on the channel, the founder of Ignited Neurons, Ignite Your Spark? I think you're the best person to identify across all age groups and help them identify that yes, there is a spark. It's just that you need to realize. I agree with that, Shubhi. But my question to the audience, बच्चे हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, like the question ultimately remains is that what are we waiting for? I mean, ultimately, we only have one life, right? And we have this opportunity every day to build new things, of doing new things. अब वो छोटी हो या बड़ी हो, that's immaterial. It's just that हमें एक opportunity मिली है कुछ नया करने की. तो I think वो inertia की जो आप बात कर रहे हो, we need to break through that inertia. Yeah. And like if there's someone who's say 75 years old and उनके पास कोई ऐसा skill है जो किसी और को सिखा सकते हैं या उनके पास जो experience और stories हैं जो किसी और को दे सकते हैं, then why stop yourself from sharing those stories to the world? उस inertia को तोड़ने के लिए we'll speak today and hopefully there'll be some actionable things that the audience can take away. Yes, Utkarsh, you said it so right. All our elders have so much experience, knowledge, wisdom, skills. And as we age, the inertia really creeps in. So when we talk about reinventing yourself and life is all about exploring yourself at all ages. So how to deal with this inertia? Yeah, I think it's a very pertinent question, Shubhi. And the answer lies that, see, अगर अभी आप you're talking about someone who's say then in their 70s and they feel 70s, that we've done everything in 60s, कहीं भी हो 50s में हो, but they sometimes tend to feel that we've done all in life. Why do we have to go back and do something else now? What's the need for that? This question can arise for a 20-year-old also, and this question can arise for a 50-year-old also. My nudge to them is to really ask कि अगर वो अपनी कहानी share करते हैं कहीं या if they go and share their experiences, they need to visualize that वो impact किसी और पे उससे क्या हो रहा है. तो जो हम बात करते हैं ना कि what is your why, कि अगर आप ये करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, उस चीज को सीख करना बहुत जरूरी है. I think for जो 50, 60, 70 या जिस भी एज ग्रुप की हम बात करेंगे, they also need to figure it out कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा. और कई बार इस क्वेश्चन का आंसर शुभी तब तक नहीं आता जब तक हम जाके कुछ कर ना लें. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोचो कि आप 50-60s में हो, रिटायर हो गए हो एंड यू फील दैट अब लाइफ में और क्या करना है, बट जस्ट इमेजिन कि अगर आप जाके किन्हीं बच्चों से कुछ बात कर सको या कहीं पर कोई सेशन कर सको या अपनी ही एज की कम्युनिटी में जाकर कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशन छेड़ सको जिससे किसी और को एक सपोर्टिव कम्युनिटी मिल जाती है. तो जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट यू कैन हैव ऑन द अदर पर्सन. और उस इंसान की खुशी के लिए एक वो अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, एंड दैट माइट स्टार्ट टू डिफाइन योर व्हाई. And once you have your why, I think उसके बाद तो there's no stopping you, right? Because then you're only motivated and inspired to do those new beautiful things. Yeah. True. Break that inertia to make an impact. And until you try, you will never know what huge difference it can make to the society. Yeah. Just imagine this to be like जब हमारे बच्चे हैं जैसे, and I know you have a daughter, I have 2 sons who are 13 and 10. अगर वो कुछ नया अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाइक चलाना ही सीख रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि मेरे को बाइक चला के फायदा क्या होगा, तो आई एज अ पेरेंट नेवर टेल देम कि कोई जरूरत नहीं है बाइक चलाने की. आई टेल देम एक बार एक्सपीरियंस तो करो. हम कुछ नया खाना खिलाते हुए बच्चों को यही कहते हैं, एक बार ट्राई करके तो देखो, क्या पता तुम्हें बैंगन का भरता अच्छा लग जाए. तो वही सेम पर्सपेक्टिव आई थिंक ऑपोजिट जनरेशन पे भी वर्क करना चाहिए और उनको भी हमारी सुननी चाहिए कि एक बार ट्राई करके देखे, मे बी उन्हें वो इतना अच्छा लग जाए कि उनके नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ के लिए उनको एक अच्छा पर्पस मिल जाए. And this journey of keep trying, keep reinventing yourself will continue forever. Let us take your example, Utkarsh.
You started your career as a physiotherapist. Yes, I don't think many of our viewers know that Utkarsh is a physiotherapist also. And then you took a complete switch. You like really reinvented yourself by quitting physiotherapy and by becoming a happiness coach, a life coach. And you founded Ignited Neurons. You started doing great content, which has a huge fan following. And it was a complete switch. तो लगा कि सब कुछ सही है. But then again, I get to hear that last year you relocated to Australia. And Yeah. why? Because your wife had got a job there. So the entire family decided to relocate. So again, there was a, कुछ उथर पुथर हुई, some stir हुआ. Again, that reinventing yourself. Again, that new action mode started. So Yeah. this journey is not smooth. हमें ना ये नहीं लगना चाहिए कि एक चीज हो गई अचीव वी आर सॉर्टेड. नो, न्यू challenges will keep coming. So what message do you have for people that what should be their approach towards this? How receptive they should be? So it's a very big question that you're asking, Shubhi, and let me just try and divide it into parts so that हमारे audience को उससे कुछ takeaways और action items मिल सकें. On the career shift journey, I started as a physiotherapist. I spent 7-8 years as a physiotherapist. I built 3 clinics. But then 2012-13 में, before I got into coaching and content creation, उससे पहले एक और फेज था जहाँ पे I joined a Columbia Business School professor. उनका न्यूयॉर्क में उनका इंस्टीट्यूट था, तो मैंने उनके साथ फिल्मिंग एंड एडिटिंग करनी शुरू करी थी. और फिर उनके साथ मैं 8 साल रहा था. आई डिड सेल्स फॉर देम. आई वाज अ चीफ स्टाफ टू द फाउंडर. सो वो 8 साल में मैंने बहुत सारे डिफरेंट रोल्स किए. और हर बार क्वेश्चन वही आता है, शुभी, कि व्हाई डू यू वांट टू डू इट. और मेरे लिए आई थिंक ये एक ऐसा, आई डोंट नो एडिक्शन सही वर्ड है या नहीं है, बट ग्रोथ एक एडिक्शन बन गया था. और वो अभी भी वैसे ही चल रहा है कि आई जस्ट इंजॉय सो मच टू ग्रो, टू ट्राई न्यू थिंग्स, टू एक्सपेरिमेंट विद माई लाइफ, बिकॉज उससे हम कुछ नया सीखते हैं हर बार. लेकिन थ्रू आउट ऑल ऑफ दैट, एट द कोर जो मैं हूँ, मैं वही रहूंगा. Utkarsh as a coach, Utkarsh as a content creator, Utkarsh as a friend to Shubhi and talking on this podcast, or Utkarsh taking care of his kids and wife would be the same person throughout. And I think once you start to understand that, कि आप असली में कौन हो, क्या हो, कैसे हो, देन वो रिफ्लेक्शन बहुत इजीली हो जाता है. और देन 8 साल उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिताने के बाद देन ये कोचिंग और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू हुई. बट द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग अबाउट दिस शिफ्ट टू अ न्यू कंट्री और शिफ्ट टू अ न्यू सिटी, और आई कॉल माई सेल्फ लाइक अ ट्रेलिंग स्पाउस. अपनी वाइफ, मेरी वाइफ को यहाँ जॉब मिली एंड आई सपोर्टेड हर एंड वी मूव्ड कंट्रीज. आई थिंक अगेन ऑल ऑफ दैट, look at the human body. Let me just backstep a bit. हमारी बॉडी में, शुभी, फिजियोथेरेपी डे से मुझे पता है कि हर 2-3 दिन में हमारे सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं. सो चेंज इज वेरी नेचुरल टू द ह्यूमन बॉडी. लेकिन कहीं ना कहीं बड़े होते होते हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि चेंज उतनी अच्छी चीज नहीं है जितना हम उसको सोचते थे. एंड आई थिंक वहां से वो रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, वहां से वो इनर्शिया शुरू हो जाता है कि मेरे को जरूरत क्या है चेंज होने की, उथल पुथल की मेरे को जरूरत ही क्या पड़ी है. बट क्वेश्चन आपको हमेशा ये पूछना है कि अगर आपकी हैप्पीनेस किसी नेक्स्ट जर्नी में लिखी है, और अगर आपकी हैप्पीनेस आप नेक्स्ट जर्नी में ज्यादा परसीव कर पा रहे हो, तो डोंट बी फेयरफुल ऑफ टेकिंग दैट जर्नी. क्योंकि वो जो फियर है जो हमें रोक रहा है करेजियस होने से, उसको हमें अपना दुश्मन नहीं समझना. वी डोंट हैव टू कंसिडर इट टू आवर एनिमी, बट इंस्टेड वी हैव टू लर्न टू एम्ब्रेस द फियर एंड मूव फॉरवर्ड इन द न्यू डायरेक्शन. नाउ टू समराइज ऑल ऑफ इट, अगर एक्शन की मैं बात करूं, जब मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा था कि हम ऑस्ट्रेलिया मूव करेंगे, तब भी हमने क्वेश्चन यही किया था कि हम 6 महीने तक एक दूसरे से बात करते थे. हमें लगता था कि हम ठीक कर रहे हैं इस एज पे नई कंट्री में जाना, बच्चे कैसे अडेप्ट होंगे, विल वी बी एबल टू गेट अकस्टम्ड टू द न्यू कंट्री, वील लूज आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, हाउ वुड ऑल ऑफ दिस हैपन. एंड सो वी वुड डाउट आवरसेल्व्स अ लॉट. तो एक दिन बैठ के हमने एक पेज पे लिखा कि हमारा इस मूव का भी वाई क्या है, हम क्यों ये मूव करना चाहते हैं. और हमने उसको लिख के अपने टीवी के साथ चिपका दिया था, और आज भी मैं उसको अपनी डायरी में लेके रखता हूँ अपने साथ, कि वो बार बार हमें याद दिला रहा था that there is a specific reason for which we are deciding to shift all of this about our life. And जब वो रीजन बहुत क्लियर था, तो सारे शिफ्ट बहुत ही इजी हो जाते हैं, शुभी. But Utkarsh, like it's not easy कि आपने एक पेपर पे why लिखा and you get the reason.
Like if we want to trigger that action mode in the audience, and वो why लेके बैठे एक paper पे, like how you said ना कि identify your core. Not everybody wants to take that keep trying mode. They are happy in their space, and we really can't force them कि आप ये करो वो करो. And honestly, my aim is not even to make them realize कि नहीं आप बैठ रहे हो वो गलत है. Whatever makes them happy is good. But what I want to know is how to get on that action, how to get on that answer to the why. How can people identify why to do certain thing or why not to do. That is more important, because when you're on the road to reinvent yourself, to rediscover yourself, you should have it clear that why do you want to do. Yeah, that's thank you for that question, Shubhi. Kyunki so here's what I'll recommend. See, ultimately it's a very introspective thing कि आपके अंदर जो क्लैरिटी है, once you have that clarity, तो आपके बाहर जो आप काम कर रहे हो वो बहुत easy हो जाता है. Now to get to that clarity, I'll recommend 2 things to my audience. पहला क्वेश्चन ऑडियंस को जो खुद से पूछना बहुत जरूरी है, एंड वो आई थिंक एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार बहुत लंबा आंसर ला सकता है बट कई बार बोलती बंद कर देता है लोगों की, which is that whatever age you are at right now, ask yourself, who am I? कि मैं कौन हूँ? And what I mean by that is, see, for me, for example, क्योंकि मैंने फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करी, तो मैं क्या सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ? I don't think so. क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, I'm married, I have parents, so should I just choose my identity related to the people around me? I don't think so. Should I choose my identity just with the profession that I am in? I don't think so. So what I want people to really think about and maybe spend some time on is कि आप हो कौन? अगर आप अपनी ये सारी चीजें हटा देते हो, बैठ के अपने आप से पूछो कि मेरे को किस चीज से डर लगता है, क्या चीज है जो इग्नाइट करती है मेरी स्पार्क जब इग्नाइट होती है तो मैं हाउ डू आई फील अबाउट इट, what brings me the biggest joy, what are some of my dreams. So we have to be very clear in terms of what our identity is and what really ignites the spark in us. Is question ka answer should be, there's only one person who can give this answer, that is you yourself. And if our audience tries that today, maybe over the weekend, maybe next week, maybe whenever they're listening to that video, it'll give them new and beautiful answers about who they really are. So that's exercise 1. The second thing that I've done in my life is, हम सबका ना लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है which consciously or unconsciously we're all living with. So here's what I want our audience to think and do. I want them to really create a circle on a page and उस circle को 8 parts में divide करना है और उन 8 parts में उनको ये लिखना है कि ऐसी क्या values हैं जिसके बेसिस पे वो अपनी जिंदगी जीते हैं. So जो शुभी मेरी 5 values हैं वो मुझे अभी 5 साल हो गए हैं जो कंसिस्टेंट हैं एंड आई नो देम लाइक बाय हार्ट. रात के 2 बजे भी अगर कोई मेरे को उठा के पूछेगा एंड दे आस्क मी उत्कर्ष व्हाट आर योर वैल्यूज, आई नो देम दैट दे आर डिसिप्लिन, एक्सीलेंस, लव, फ्रीडम एंड ग्रोथ. सो अब मैं लाइफ में जो भी डिसीजंस लेता हूँ, दोज डिसीजंस गेट बेस्ड ऑन टू दीज वैल्यूज. बट अगर कोई 60 ईयर ओल्ड है या 50s में है जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आई वॉन्ट देम टू थिंक अबाउट दिस कि इस स्टेज पे भी लाइफ के द वर्ल्ड हैज गिवन द आइडेंटिटी दैट नाउ यूर रिटायर्ड. Now you should not have a purpose in life. You should stay at home. You've done everything. You've done beautiful things on this planet. But who's going to stop you? Maybe अभी आपकी लाइफ में 10, 15, 20, 30 साल और हैं. Imagine उस 30 साल में आप रोज किसी एक इंसान से कुछ ऐसी बात करते हो जो उस इंसान की लाइफ चेंज कर देती है. Imagine the ripple effect. Imagine the domino effect that you can have on that person. And that answer will come to you only when you do introspection कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहता या करना चाहती हूँ. I hope that helps make this more actionable, Shubhi, for our audience. It really helps, Utkarsh, and that is why I wanted you to be on the channel for this particular series. And Utkarsh, like how you mentioned about your career growth, your personal life journey, so many switches and all, it is not an individual thing alone. It is a collective thing. Your parents' reaction, your wife, most importantly, her thing. It's not easy to quit a stable job and then get into this journey of content creation, जो अब जाके लोगों को थोड़ा समझ में आने लगी है, not 3 years back. So this journey of reinventing yourself is never alone. It is a teamwork of your family majorly. So what was their reaction? How much support you got from them? And so the only request I have for our audience is that whenever they have to change anything, they have to get their family along. I think that's important. But in case the family does not come along for the short term, आपको खुद में इतना विश्वास रखना पड़ेगा कि
कोई सा भी पहाड़ सामने आ जाए, you have to believe that you can overcome that mountain. क्योंकि अगर if you stop believing in yourself, then no one else is going to believe in you. And so that's one advice that I'd love to share with our audience. Yeah. And it's a great advice. And your journal, which you have written, I must congratulate you for this, for adding another feather to your cap. You're an author also now. So tell us about what motivated you to write this journal and what is it all about? Yeah. I really appreciate that, Shubhi. You know, I coach a lot of people, Shubhi, and I've coached about 1,000 hours over the last 2-3 years. And every time I was having this conversation, it used to come down to the why or to the values, jo baat humne abhi kari. And I was thinking, why do people really just need me to go on this journey? And I thought, if I can create some kind of a product where people can go on to this reflection on their own, then that would really help them. So isliye we've built this Ignite Life Journal. This is about 183 pages of exercises. Har page pe ek naya question hai. And this will help people reflect on who they are, who they want to be, and what is coming in the way, and how can they resolve those challenges and obstacles that come. And since your mom is a fan, and इस journal के आखिरी page पे we have a Gita का श्लोक, Shubhi, जिसका English translation I love to do for our audience right now. It says, "It is far better to perform one's natural prescribed duty, though tinged with faults, than to perform another's prescribed duty, though perfectly. In fact, it is preferable to die in the discharge of one's duty than to follow the path of another, which is fraught with danger." सार ये है कि अपना गिफ्ट आप फाइंड आउट करें लाइफ में. आप 30s में हैं, 60s में हैं या 80s में हैं, फाइंड दैट गिफ्ट, बिकॉज यू स्टिल हैव दैट स्पार्क, यू स्टिल हैव दैट गिफ्ट, एंड उस गिफ्ट को दुनिया को जाके बांटें, क्योंकि यही ह्यूमन लाइफ है. चाहे हम कुरान को देखें या गीता को देखें या बाइबल को देखें या गुरु ग्रंथ साहिब को देखें. Wonderful. And कहते ना, when you ignite your spark, you not only ignite your spark, you ignite the sparks of so many people around you. So the entire crux of this talk, why to reinvent, how to reinvent, and why should you reinvent, is simple. That getting out of your inertia, making that small difference in your life can make a huge impact to anybody else's life. So get started, get in that action mode, and ignite your spark. Thank you, Utkarsh. Thank you so much for these insights.